Today let's start with chapter number 3, agriculture, soil and crops. So in this chapter I will tell you about what is agriculture. I will tell you about the different types of soil. We have laterite soil, alluvial soil. So we red soil, we have different types of soil. Black soil also is the type of soil, and then let's study about different crops. We have cash crop, commercial crop, right? So let's start with the chapter now. What is agriculture? Agriculture or farming, what it means? It means cultivation of land to produce crop. हम जब land की cultivation करते हैं और crop produce करते हैं, that is known as agriculture. It is also includes horticulture, livestock rearing and fishing. Horticulture means you know that where we grow flowers, fruits and everything. Livestock rearing, यहाँ पे हम animals को rear करते हैं for milk, for meat, and next is fishing. So agriculture, it is the main occupation in India. More than 75% of Indian population is involved in agriculture. जो आपकी 75% of Indian population है वो आपकी किसमें involved है? Agriculture. So we can grow many crops such as cash crop, fruits and vegetable in India. Because India has favorable climate, इसका favorable climate है, fertile soil है और rainfall जो है वो कैसी है? Adequate है. So irrigation facilities or provides an area with little rainfall. एग्रीकल्चर क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रीज के लिए. वाई? बिकॉज इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल. वो हमारे को क्या प्रोवाइड करवाती है? रॉ मटेरियल. नाउ सॉइल. एग्रीकल्चर इज डन इन द लूज टॉप लेयर ऑफ द अर्थ विच इज कॉल्ड सॉइल. इट इज वंडरफुल गिफ्ट ऑफ नेचर. ये क्या है? एक वंडरफुल गिफ्ट ऑफ नेचर है. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर टू प्लांट्स. इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स and water that helps the plant to grow. Soil is formed by the weathering of rock, and what happens? Decaying of dead plants and animal is done over. Soil contains sand, silt, clay in different proportions. Silt is the largest particle of soil. It is rough in texture and does not hold much nutrients. ठीक है, ज़्यादा nutrients hold नहीं करता. And what is silt? It is a powdery texture and is fertile. Clay is the smallest particle of soil. जो clay होता है वो सबसे छोटा particle होता है soil का, and it is smooth in texture. ये texture में बहुत smooth होता है when it is dry and sticky, right? And when wet. Let's study about the different types of soil. First is alluvial soil, वो बहुत ज़्यादा fertile soil होती है, and it is a mixture of sand, clay and silt. It is also called loam. This type of soil is found in Indo-Gangetic plains. और जो नर्मदा और तापी वाली जो वैलीज हैं मध्य प्रदेश में, वहाँ आपको देखने को मिलती है. इन रिवर कावेरी, जो आपका कहाँ है? तमिलनाडु, राइट? फ्लोइंग रिवर कैरी दिस सॉइल एंड डिपॉजिट इन द कोस्टल प्लेन. और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फॉर एग्रीकल्चर. और जैसे आपकी क्रॉप हो गई वीट, राइस, पल्सेस, ऑयल सीड, पोटैटो, मेज, मिलेट, शुगर के, यहाँ पे इनको हम ग्रो करते हैं. वेल वी हैव ब्लैक सॉइल विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर. It is known as regur soil. It is hard when clay, dry and soft, and when wet. और ये किसमें रिच होती है? मिनरल रिच होती है. It is found in states. ये आपको जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे स्टेट्स में देखने को मिलती है. Like cotton and sugarcane, they are grown in this soil. Now red soil. Let's study about red soil. ज़्यादा fertile नहीं होती है, red in color होती है, but it is easy to plow, poor in mineral and lack organic mineral. और ये आपको कहाँ देखने को मिलती है? तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. Crops such as groundnut, ragi, milk जिसे हम कहते हैं, tobacco and vegetables, they are grown over here. ये यहीं पे growth है. Then we have mountainous soil. What is mountainous soil? So this is the soil which is found in hilly areas. The soil is thin and not very fertile. बहुत पतली होती है, ज़्यादा fertile नहीं होती है. और crops जैसे आप tea, coffee, spices, fruits, they are grown here. Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Assam, Sikkim, and Arunachal Pradesh. These are the places where you found mountainous soil because they are grown on mountain areas. Then we have desert soil. It is called sandy soil. It is infertile and not fit for agriculture. ये बहुत ज़्यादा soft होती है और इसको ये moisture को hold करके नहीं रखती है. This type of soil is found in the state of Gujarat and Rajasthan. ये construction of building, dams and roads where it is used. Crops like gram, millet, wheat, cotton, dates and some fruits are grown over here.
Then we have soil management. Soil is valuable natural resource. It's important to care for it. बहुत ज़्यादा important है कि आप इसकी care करो. The following steps are there to conserve our soil है, like make bunds, plant trees, shrubs, grasses, practice crop rotation and step or terrace farming. Use natural manure. जैसे आप काउ डंग हो गया, आपको नेचुरल मैन्योर का इसमें यूज करना. Then cropping season, we have different cropping season, Kharif and Rabi. If you talk about Kharif, they are sown. कब उगाए जाते हैं? समर में, and they are harvested in winter. Crops जो winter में उगाए जाते हैं, harvest कर जाते हैं समर में, they are called Rabi crops, right? And Kharif crop requires lot of water and need hot weather to grow. और जो Rabi crop है, they require cool climate at the time for sowing और warm climate चाहिए उसको during germination and harvesting. So major crop are millet, sugarcane, maize, pulses, groundnut, jute, or कुछ wheat, mustard, oilseed, barley and gram are the crops that are grown in Rabi season. Now food crop. We have different food crops, the crops that are grown to feed the population. The people, population में people आ जाते हैं, जिनको हम people को क्या करते हैं? Feed करते हैं. So we have rice. India, it is the second largest producer of rice in the world. Largest being China, rice is the staple food of the people. जो South और East India के लोग हैं, उनका staple food होता है, right? So rice grow well in hot and humid climate and requires lot of water. Mainly West Bengal, Assam, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Odisha, Haryana, Punjab and Uttar Pradesh. These are the different states where rice is grown. Next is wheat. It is the staple diet for the people of North Indian state of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh. Wheat is cultivated well in the Gangetic plains and the Deccan Plateau. It is winter crop and what it's need? It's need a cool and moist climate. Let's study about the other important crops like maize, millet, ज्वार, बाजरा, रागी. Pulses में आपका black gram हो गया, तूर दाल हो गया, green gram हो गया, groundnut हो गया. कुछ important food crops है. Then we have sorghum and millet, dry plant crop that are often refers to as coarse grain. They are mostly grown in peninsular India. Corn and barley, they are eaten by the people who live in the hills. और ये आपके जितने भी other parts हैं वहाँ पे grow कर. Now we have cash crop. So the crop that are raw materials, आपके raw material हो गए, which is used many large scale and small scale industry. They are called cash crop. Like we have sugarcane, tea, coffee, rubber, cotton, jute, spices and oilseed. What are these? These are the cash crop. इनको हम large scale पे produce करते हैं, जिस हम market में इसको बेच सकें, right? Then we have sugarcane, second largest producer after Brazil. इसका जो climate है वो hot और moist climate है. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, Tamil Nadu and some of the states which grow like sugarcane. Tea, which is very popular beverage in India. It is the second largest producer of tea in the world. It grows well in the warm and wet climate. और यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी की नीड पड़ती है इंडिया में, जो आपकी कहाँ प्रोड्यूस होती है? दार्जिलिंग. कौन कौन से स्टेट? असम, वेस्ट बंगाल और नीलगिरी. ये कुछ स्टेट है जहाँ पे आपको टी देखने को मिलेगी. Then we have coffee. Coffee, it is the second most popular drink. It grows well in cool climate and requires heavy rainfall. India export coffee to many other countries and coffee is grown in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. ये कुछ states हैं जहाँ पे आपको coffee देखने को मिलते हैं. These are the coffee producing states. Now rubber, third largest producer. Rubber tree को hot and wet climate चाहिए. It is produced from latex that is extracted from the trunk of rubber tree. Major rubber producing states कौन कौन सी आपकी? केरला, कर्नाटका and Tamil Nadu. Then we have cotton and jute. यहाँ पे जो climate है वो hot और wet होता है, right? And mainly in गुजरात and महाराष्ट्र. इसको हम गोल्डन फाइबर कहते हैं ड्यू टू इट्स कलर. ये आपको स्टेट्स जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है. देन स्पाइसेस, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में. इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सॉरी नॉट सेकेंड लार्जेस्ट, इट इज लार्जेस्ट. जिसमें आपका पेपर, जिंजर, सिनेमन, कार्डमन, चिलीज और क्लोव्स होते हैं, राइट? कुछ स्टेट्स जैसे केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, कुछ मेजर स्पाइस ग्रोइंग स्टेट्स हैं. देन वी हैव ऑयल सीड्स. इंडिया क्या है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में. यहाँ पे मस्टर्ड, ग्राउंडनट, लाइन सीड, सी सीड, सनफ्लावर, सोयाबीन और कैस्टर सीड देखने को मिलती है.
ये आपको मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसी स्टेट्स में देखने को। व्हाट इज हॉर्टिकल्चर? जहाँ पे आप, मैंने आपको बताया था, जहाँ पे आप फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब ग्रो करते हैं, उसको हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। दे आर ग्रोन फॉर सेल इन द मार्केट एंड इट्स क्रॉप्स आर ग्रोन इन इंडिया। लाइक वी हैव फ्लावर्स में आपका मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, जैस्मीन। इफ यू टॉक अबाउट फ्रूट्स, मैंगो, एप्पल, पपाया, वेजिटेबल्स, पोटैटो, पीस, pumpkin. And horticulture crops are mainly grown in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim and northeastern states. Now agriculture today. So post-independence, 5-year plan was established to bring a green revolution or make India self-sufficient in crop production. So today India has evolved greatly. The farmer used tractor instead of conventional sowing method. So what happened? They are provided good seeds and fertilizer by the government, and machines are employed for sowing, reaping and harvesting. And all these has contributed to the growth of agriculture in India. Right? Hope you understood. This is all about in this chapter. Now we will meet in next class. Thank you.